Today we are going to discuss about the permanent tissues. Before this, we have discussed in first video regarding what are tissues, what is the importance of tissues, and meristematic type of tissue. That is one of the type of plant tissue. Today we will starting with chapter tissue and the topic simple permanent tissue. Welcome to my channel Learn Science with Yasir Azam. Today we will be discussing this and we will be understanding what are the simple permanent tissues. We had discussed that many meristematic tissues were dividing and living tissues or living cells, and they all were similar in structure. There was no differentiation. Then what comes in permanent tissues? The term permanent itself suggests that something is going to get settled up. Like when you get a job, not you, when somebody gets job, so initially they are on provisional period and after some time they get permanent. Means the time they are learning and they are getting the proper training, till then they are not permanent. But once they are mature to understand or to do their tasks, they are called as permanent, or they refer to be permanent in their jobs. Similar happens with the tissues. Till now we have discussed about meristematic tissues. They were undifferentiated and long, continuously dividing cells. Now when they stop dividing and becomes differentiated, what is the process of differentiated? Means that tissues or the cells now have been evolved to perform a particular function and has become mature enough to do their task. Now we call them as differentiated, and then they are present or grow at a specific part of the plant. Okay, so what are permanent tissues? Permanent tissues are differentiated, non-dividing and permanently placed tissues. Now in permanent tissues also they are further categorized into two parts, simple permanent tissue and complex. We will discuss only simple permanent tissue in this video. What are simple permanent tissue? Name suggests itself, single type of cells are present in this tissue. That's why they are called as simple. Why we call something simple when it is simple? Okay, it's quite funny, but simple means they are having single type of cell. That's why we refer them as simple permanent tissue. This is further divided into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma is again further divided into storage parenchyma, arenchyma and chlorenchyma. Never get confused chlorenchyma with collenchyma. Now let us understand from very start what are permanent tissues. Okay, I have made some notes. I'll send you the PDF and you need to copy down them. Okay, permanent tissues are the tissues in which cells have lost their ability to divide. Now they are not going to get divide further anymore. डिवीजन का काम मेरिस्टेमेटिक करेंगे. इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मेरिस्टेमेटिक और ये अलग है. मेरिस्टेमेटिक ही डिफरेंशिएट होके इवॉल्व होके बनता है हमारा परमानेंट. सिंपल परमानेंट क्यों? क्योंकि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स आर देयर. सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस. एज आई हैव टोल्ड यू, डिफरेंशिएशन का काम ही यही है कि टू मेक देम स्पेसिफिक फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर function, and there is a little bit intercellular space present between these cells. May be absent also. In meristematic I have told you there was no intercellular spaces between the cells, but in this case there may be intercellular spaces, may not be intercellular spaces present. Some are having very much intercellular spaces which make them airy. I'll let you know later. Okay, next is nucleus is small and absent in dead cells. Yeah, nucleus is small because now vacuole size has increased because it has to store food for cell to perform various functions and activities. Now coming to the types of simple permanent tissue, they are basically, I have written parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These are supportive type of simple permanent tissue. Two categories are there. Number one, supportive permanent tissues, simple permanent tissues, and protective simple permanent tissues. First we will be starting with supportive. Supportive नाम से clear है, which supports the plant in its growth, mechanical support. कि बारिश हो रही है, then also it is giving it and the plant strength. हवा चल रही है, then also plant is getting the strength. So basically support का काम ही हो गया, supportive tissue का काम ही हो गया to provide support to the plants. Okay, parenchyma के बारे में जब हम बात करते हैं, they are unspecialized, living plant cells. Why? क्योंकि अभी meristematic से permanent बनना शुरू हुआ है. This is the initial stage, simple में. यहाँ पे आते आते सब कुछ हो चुका होगा कॉम्प्लेक्स में. बस सिंपल में ऐसा नहीं कि लिविंग से सारे रैंडम डेड हो गए. अभी धीरे धीरे पहले लिविंग से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन शुरू होगा, उसके बाद दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन लिविंग. दे आर अनस्पेशलाइज्ड living plant tissue. Now the next point for parenchyma is they are isodiametric. Isodiametric means each cell of these tissues, parenchyma, are isodiametric. They all are having similar diameter. Now the next is they are considered as
ground tissues. Why they are considered as ground tissues? Because they are very fundamental in formation of plant. They are present in entire plant, root, shoot, leaves, everywhere they are present. That's why they are called as ground tissues. Okay, and they are found in all the soft parts of the plant. Along with that, if we talk about their shape, they vary in their shapes as per their position as well as their function. Naturally, when we used to go to our work, we say different people are having different kind of personality. Some are dominating, some are recessive. Everybody will be similar who will work. Okay, so this system of division of labor is very important in the society as well. Similar happens with the plant. Different cells are having different kinds of shape. For understanding this, you need to see your book, because I don't have that much space to show you diagrammatically. You listen me thoroughly and just open your book, you will get a better understanding of the diagrams. They are existing in rounded, oval, polygonal shapes, okay, with intercellular spaces. Now coming to the types of parenchymatous tissue या simple parenchymatous cells कि जब हम बात करते हैं, they are categorized into storage parenchyma, aerent parenchyma and chlorine parenchyma. Storage की बात जैसे ही आती है समझ आइए, it is used for storing the food material. Okay, which food they will store, which is being synthesized by the plants. How it will be synthesized? For plant, it is important that chlorophyll must be there so that they can perform the photosynthesis. So here the term chlorenchyma itself suggests that in it chlorophyll is present. What will happen in the presence of chlorophyll? Wait a minute. Okay, so chlorenchyma, नाम से clear हो रहा है. Chlorine means chlorophyll will be present there. Chyma word parenchyma is similar because similar tissues are there. Just chlorophyll is present. That's why we are calling them chlorenchyma. Chlorenchyma, due to presence of the chlorophyll, they are responsible for performing photosynthesis. As photosynthesis will happen, definitely there will be formation of food material for the plant. That will get stored in the storage parenchyma. Okay, now aerenchyma की जब हम बात करते हैं, in case of aerenchyma, what is happening? You must have seen lotus plant and various floating plants in water bodies. How they are floating? Why they are not getting submerged inside the plant? It means there are some spaces between them which is making it buoyance or providing it buoyancy. So what is this? This is special kind of tissues present in simple permanent tissue, part of parenchyma, that is aerenchyma, having large air cavities, large air spaces between them which help to provide the plant buoyancy. As a result, the plant is able to float. Okay, now the next is collenchyma. Collenchyma is also when parenchyma keep dividing. मैंने भी आपको बताया मेरिस्टेमेटिक से सिंपल में पहले parenchyma आएगा, यही parenchyma डिफरेंशिएट होगा collenchyma में बनेगा, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है. आप इसको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं. ठीक है, चीज समझ में आ जाए तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं या प्रिटेंड कर सकते हैं कि आप प्रिटेंड तो सही वर्ड नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, इन योर कॉपीज यू नीड टू मेंटेन डायग्राम नीट एंड क्लीन. इफ यू आर मेकिंग डायग्राम एंड डिस्क्राइबिंग द कंटेंट, यू विल गेट अ बेटर chance of getting good score. Okay, coming to collenchyma. Collenchyma basically derived from the parenchymatous cells. Okay, and in this what is happening? Elongation of cell and thickening of primary cell wall. ठीक है, and thickening of primary cell wall is not in entire cell. It happens at the corners of the cell. Okay, in case of collenchyma. Okay, it is present in dicot. It is not present in monocot stem. Remember, sometime difference may come in monocot dicot stem. Then you can write this also. Okay, in monocot the collenchyma is absent. Okay, cell walls in collenchyma are still living and elongated. Okay, and this gives plant to plant mechanical support. Okay, and one question may come कि corner पे जो इसकी thickening है वो किसकी वजह से है? Because of what reason they are thickened at the corner? They are thickened at the corner because of cellulose and pectin. Okay, remember this, cellulose and pectin. Okay, bacha. Now coming to the last part of the simple permanent supportive tissue, that is sclerenchyma. We will discuss epidermis or cork also. If you are seeing the content from NCERT, then you will think this is very vast. So you need to read reference book only, because in NCERT it is given in very short. What is the purpose of NCERT? Basically, they used to give you all the terms which you need to read through various books. But for board examination, you will be reading NCERT
you will be giving much time to your NCERT, but for class 9 you need to understand you need to read various books, okay, you need to increase your knowledge, okay. So बच्चा स्क्लेरेनकाइमा की जब हम बात करते हैं तो क्या हुआ, नाउ यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से यहाँ पहुंचे तो और हार्ड हो गया. In case of sclerenchyma, they are hardest among these simple permanent tissues. They are long, narrow, fiber-like with pointed ends. This you will write in the definition. What happened? Ki they keeps on thickening. They keeps on getting thick, lignified. Why? Because of the lignin. But lignin से thick तो हो रही है, but they will lose their protoplasm. तो प्रोटोप्लाज्म से ही लिविंग चीज, कोई भी चीज लिविंग जब है उसे प्रोटोप्लाज्म लूज कर देंगे, मीन दे विल बिकम नॉन लिविंग. तो अब यहाँ से लिविंग से मेरिस्टेमेटिक से शुरू हुए थे, कॉलन तक चलेंगे, उसके बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है. ओके, नाउ वेयर डज इट अकर? स्क्लेरेनकाइमा के बारे में जब बात आती है तो इट अकर्स इन रूट स्टेम, लीव्स, पेटियोल एंड एट मेनी प्लेसेस. अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें स्क्लेरेनकाइमा की तो ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट होता है. ऐसे समझ लें कि बहुत से, जैसे आपने हस्क ऑफ कोकोनट यू सी, ठीक है, या हार्ड शेल्स ऑफ नट जो होते हैं, जो नट की हार्ड शेल्स होती है उनमें भी स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं. ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स. फाइबर्स तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्लोज के टर्म्स में भी सुन लेते हैं, ठीक है, कॉटन का फाइबर, ये फाइबर, वो फाइबर. फाइबर तो हम फैमिलियर है टर्म से, लेकिन जो स्क्लेरेट्स हैं दे आर वेरी हार्ड. समटाइम्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोन सेल्स. ओके, वी विल रीड इन डिटेल. व्हाट हैपेंड? दे आर मेड अप ऑफ their cell wall is made up of lignin as well as cellulose and hemicellulose. That's why they are called as lignified, because they are made up of lignin. And coming to fiber, fiber के लिए आपका example है जैसे जूट है, hemp है, ठीक है, rope है, mat है. This all we make from the fiber. Okay. Sclerates की बात करेंगे तो they are also called as stone cells, as I have told you, as well as they are also called as grit cell. Okay. बच्चा, coming to फंक्शन ऑफ स्क्लेरेट्स की जब हम बात करते हैं, naturally they are strong, so they provide the support as well as rigidity to the plant. ये तो हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का सपोर्टिव टाइप, ठीक. अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव टाइप की. लिखा कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू लिसन. प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? अगर हम बाहर जाते हैं, हमें बहुत जाड़ा लग रहा है, तो प्रोटेक्शन का काम हमारी जैकेट करती है. बारिश हो रही है, प्रोटेक्शन का काम हमारा कौन कर रहा है? रेन कोट कर रहा है. और आजकल कोरोना से चल रहा है, तो प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है? हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारा मास्क कर रहा है, और जो नहीं सुधर रहे हैं उनके लिए पुलिस वालों का डंडा कर रहा है. तो ये सारे काम जो है प्रोटेक्शन की किसी ऐसे सेल्स को मिलने चाहिए विच शुड हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट. मीन्स उसके अंदर हार्डनेस होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए. और उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जब हम प्रोटेक्टिव पढ़ते हैं. एक एपिडर्मिस है, दूसरा है हमारा कॉर. एपी मतलब टॉप है, डर्मिस मतलब आप जैसे समझे सरफेस कह लें ऐसे सेल की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी प्लांट की. सो जब हम एपिडर्मिस की बात करते हैं तो इट इज अ थिक कवरिंग ऑफ सेल ओवर द एंटायर प्लांट. ओके, इट इज प्रेजेंट इन द एरियल पार्ट्स. ओके, व्हेन इट इज इन द एरियल पार्ट वी यूज्ड टू कॉल इट एपिडर्मिस. जब रूट की सरफेस पे होती है तो वी कॉल्ड इट एज एपिब्लेमा. ओके, लीफ में जो एपिडर्मिस होती है, इट इज हैविंग स्मॉल पोर्स. शुरू से पता है, पढ़ते आ रहे हैं, दैट पोर्स आर स्टोमेटा. स्टोमेटा इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट. वहीं से हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में पानी मिला के बढ़िया ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ओके बच्चा, तो कॉर की बात करते हैं तो कॉर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेलन. ठीक है, कॉर का काम क्या है कि कॉर के अंदर 3 थिंग्स आर देयर. ओके, नॉट 3 थिंग्स बेसिकली, इसमें तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा मैं. ऐसे समझे कि इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन का. लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती है इसमें जो रात में इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगी, जो स्टोर ऑक्सीजन है जिससे वो फोटोसिंथेसिस, नॉट फोटोसिंथेसिस, जिससे वो जो है रेस्पिरेशन करेगा. और इसका कमर्शियल यूज भी बहुत ज़्यादा होता है. जैसे आपने शैम्पेन की वो ढक्कन देखा होगा, दैट इज मेड अप ऑफ कॉर्क. हार्ड शेल जो प्लांट की बाहर होती है, ऐसे डेड सेल उसको ऐसे निकालते हैं, लकड़ी जैसा हार्ड क्या बोलते हैं, छाल जो प्लांट की, दैट इज कॉर्क. ठीक है, तो इन डाइकॉट स्टेम एंड रूट्स the cells of protected tissue at the periphery change into the cork cell. This is very easy to understand. They are dead and closely packed. They are dead and closely packed. Okay, इसके अलावा क्या बताना है कि सुबेरिन एक पिगमेंट होता है which is present in the cork. What it performs basically, ये water resistant होता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर नहीं आता है. कि मान लो डेड सेल है तो बहुत सारा स्वेलअप हो जाए बाहर, अगर बहुत सारा मॉइस्चर उन्हें मिल जाएगा बहुत ज़्यादा रेन में. सो सुबेरिन सब्सटेंस इज प्रेजेंट विच बेसिकली impervious to water and air. This was all about
simple permanent tissue. Let us recapitulate. We have discussed about tissue, definition of tissue, then we have discussed the function of tissues. Now coming to types of tissues. It is present in plant and animal. On that basis we say plant tissues and animal tissues. We are discussing now plant tissues. In plant tissues we have already discussed about meristematic tissues. They were dividing, they were living, okay, they were undifferentiated. Now when we come to permanent tissues are basically differentiated, not dividing and permanently placed. Now permanent tissues are divided into simple permanent tissues and complex permanent tissue. Simple permanent tissues are further divided into two parts, protective tissue and supportive tissue. In supportive tissue we will read about parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma is विख्यात है, पूरे प्लांट में प्रेजेंट होता है. इसके फर्दर तीन पार्ट्स हैं, स्टोरेज पेरेंकाइमा, एरेंकाइमा एंड क्लोरेंकाइमा. क्लोरेंकाइमा का काम, जहाँ पे भी क्लोरेंकाइमा आप सुनेंगे मींस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट. इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ फूड. स्टोरेज जो स्टोर कर लेगा जो भी फूड बन जाएगा. और हमारा क्या बचा, एरेंकाइमा, एयर कैविटीज होंगी जिससे प्लांट फ्लोट करेगा. कोलेनकाइमा का मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम है. यहाँ से यहाँ डिफरेंशिएशन शुरू हो चुका है. यहाँ पे थिकनिंग ऑफ वॉल्स विल गेट हैपन एट द कॉर्नर्स because of deposition of cellulose and lignin. Now from here to here we will move to sclerenchyma. It is further of two types, fibers, and I have told you about this that they are further divided into fibers and sclerates. Fibers हम बहुत familiar है, जैसे प्लांट के कुछ पार्ट से फाइबर बनता है. फाइबर बनता है लाइक हम और जूट, ठीक है, लिनेन जो कुर्ता लिनेन का पहनते हैं, ईद में बनवाया है मैंने. सो जो स्क्लेरेट है वो हमारा हार्ट सेल है जिसको हम स्टोन सेल भी कहते हैं, ग्रिड सेल भी कहते हैं. In upcoming session we will study the complex type of tissues. बेटा बहुत बड़ा चैप्टर है. You need to do the reading every day. हाफ एन आवर अगर आप रोज थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो you will get familiar with the terms. पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा को आपको पेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ही कहना है. इसके अलावा आप कुछ और नहीं कह सकते. टर्मिनोलॉजी आर वेरी strict in biology which you need to follow. English में sometime if we don't understand hard English we use very easy words in English, but in science we cannot do so because we need to understand the terms are fixed. Parent, colon and scleron, you need to understand them. And wait for the second video, there you will get about the complex type of tissues like xylem and phloem. Till then, stay safe, keep working hard, keep helping your parents, keep supporting the people who need you. Thank you everyone.